other part that is called as a sign convention. साइन कन्वेंशन भी मैंने आपको बोला था कि भाई यू वी एफ आर जो हमारा जो है उसमें से हम लोग क्या बोलते हैं, तो कभी हम लोग ने कनकेव मिरर वी हैव यूज, तो कनकेव के लिए यू वी एफ आर ऑल आर नेगेटिव, और कन्वेक्स के लिए यू वी आर नेगेटिव, एफ एन आर पॉजिटिव. Why F and R are positive? Because you know that के radius of curvature for the convex is the outside, means the right hand side पर होता है, and it is right hand side, so you can say that it is positive. F positive है तो R भी positive होगा, और you can say vice versa case. So this is the relationship between the focal length and R. Only change you may have observed for the convex type of a mirror is that its equation is common, but this thing is that sign is something different. So sign का भी discussion I have just told you in front of you. Now what I am just coming over here is that next feature that is called as a magnification. What is magnification? You may have used in your childhood days that magnifying glass. It is making those things enlarge. Sometimes if you have visited that for your watch repairing shop, you may have observed that person is using such type of a glass. Sometimes they are for mobile repairing, they are using magnifying glass to see those objects somehow magnified. They are using magnifying glass. So that is the same course we will follow over here, is that called as a magnification. It is called as a enlargement of image, is called as magnification. Some people say, sir, is this necessary that whenever you are using this word magnification, your image will be always enlarged? It is not necessary that. Sometimes enlargement, or you can say that compression of image. Better to use a single word, common word. It is called as a change in the image. If you are using this word, change in image word, then it is the proper word. Because not all the cases when you can say that image is enlarged, image is compressed, it means that if my object is like this one, let's say I'm drawing a simple arrow, either its a height or its a area will be increased whenever I will see from a mirror, or maybe that is called as a compression. If you are comparing with your original image, original object, your image is something different, is called as a magnification. So now we will derive its expression. It's an expression after derivation of its formula equation. We will give more to definition. So first of all, I am just giving you that idea how magnification will work. So let's say I am drawing a such type of figure in front of you. Let's say I am putting such a curved part. In this curved part, I am putting an object over here, which is holding some length. So I'm drawing my principal axis. First of all, this is my principal axis, let's say. And on this principal axis, I'm just putting this point P. This is the point P, which is called as a pole part. Now, I am putting my object over here, which is holding some height. And I am naming this one as A and B is my object, and it is holding some height that is called as a H. Now you are aware that whenever you are putting some object, its a distance is called as a U. Object distance is always called as a U. So I am putting that this is my object distance, and its a name is called as a U. So this is my U. Now, if you observe this figure, same type of figure I will draw for another thing that is called as image distance. So let's say numerous number of rays are passing from it and they are creating an image. So let's say this is my incident ray and this one is called as a reflected ray. Same is the equation, same is the ray which is passing from here and again reflected back from here.
You can put numerous type of rays. Let's say I'm putting another ray and it is also coming back over here. So when all those rays are after reflection coming back or meeting or merge at one particular point, and that point I'm putting over here, this is called as my image point, where my image is formed. If you remember such type of equation in your 10th exam, you are knowing that either curved mirror in the concave or convex, if my object is behind C, my image is between C and F. Gradually, I'm bringing my object near to the mirror. My image is gradually, I'm getting behind onwards. So this is how I have placed my object somewhere between the C and F. So my image will be between C and F. There is no need right now to place a C and F, but I can just say that okay, my image I am receiving over here is somewhere between C and F. So now I am drawing inverted image. चलो टाइप ऑफ इमेज का भी डिस्कशन कर लेते हैं. टाइप ऑफ इमेज क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय ऑब्जेक्ट का इंसिडेंट एंगल इज कॉल्ड एज आई. तो दिस इज माय इंसिडेंट एंगल इज आई एंड आई एम टेकिंग ओनली सिंगल रे. आप कोई भी रे ले सकते हो. तो मैंने एक सिंगल रे पकड़ लिया कि जिसका नॉर्मल मींस मेरा प्रिंसिपल एक्सिस इज बिहेविंग एज अ नॉर्मल, उसका इंसिडेंट एंगल इज आई और रिफ्लेक्टेड एंगल इज आर. तो इन्वर्टेड इमेज में मैं डाल देता हूँ बी डैश और ये हो गया मेरा ए डैश. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था h, तो मैं हाइट ऑफ इमेज डाल देता हूँ, इट इज कॉल्ड एज h डैश. तो उसको ऊपर से यहाँ तक का डिस्टेंस अप टू a डैश इज कॉल्ड एज h डैश. तो दिस इज माय इमेज डिस्टेंस. चलिए भाई, ट्राइंगल दिख रहा है मुझे, तो आई एम पुटिंग दोज थिंग्स टुगेदर ओवर हियर. तो एक छोटा वाला जो भी डेटा है वो लिख लेता हूँ. h is called as height of object and that is called as AB, and then h dash is called as height of image and that is called as a dash b dash or b dash a dash. Angle I is called as angle of incidence and angle R is called as angle of reflection. अभी एक छोटा वाला डेटा और प्लेस कर लेते हैं कि जहां पर इमेज फॉर्म होता है एंड दैट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर सरफेस, मिरर की सरफेस से जहां पर इमेज फॉर्म होता है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज अ वी डिस्टेंस. तो चलिए अभी वी डिस्टेंस बोल देते हैं इसको. तो लेट्स से मेरा यहाँ ए डैश से लेके मेरा जो मिरर का सरफेस है वहां तक का डिस्टेंस इज दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज अ वी डिस्टेंस. चलिए भाई, सब कुछ डेटा हमारे पास है, तो आई एम ऑल्सो मेंशनिंग दिस थिंग्स एज वेल. लेट्स से आई एम जस्ट सेइंग दैट बी से लेके पी का डिस्टेंस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड दैट इज कॉल्ड एज यू. और यू कैन से दैट बी डैश से लेके पी का डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड एज इमेज डिस्टेंस. इसको हम लोग बोलते हैं वी बोलते हैं. तो भाई मेरे पास जो भी डेटा चाहिए था वो हर कोई डेटा मेरे पास है. अभी मैं इसको एक अनदर फॉर्मेट में, मीन्स मेरा एक छोटा वाला ट्राइंगल मुझे दिख रहा है, एक ट्राइंगल मुझे दिख रहा है ए बी एन पी और एक ट्राइंगल मुझे दिख रहा है ए डैश बी डैश एन पी. चलो उसको हाईलाइट करके देख लेते हैं तो आपको और पता चलेगा क्लियर कि भी किसकी बात कर रहे हैं. तो यू कैन सी दैट दिस इज द ट्राइंगल आई हैव दैट इज कॉल्ड एज ए बी एंड उसके लेके पी वाला, ये वाला ट्राइंगल बड़ा वाला, एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज अ डाउन साइड ट्राइंगल. दिस इज द अनदर वन. तो अभी ये दो ट्राइंगल को मैं कंपेयर करवा रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. चलिए नेक्स्ट वाले पेज पे चले जाते हैं. तो आई एम पुटिंग दिस कंडीशन कि भाई एंगल आई इज इक्वल्स टू, तो एंगल आर इसको मैं बोल देता हूँ बिकॉज ऑफ इट इज कॉल्ड एज अ कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्शन. चलिए मैं tan i इक्वल्स टू tan r डाल देता हूँ. तो tan i इज इक्वल्स टू tan r
अभी 10i में बोल सकते हैं हम लोग ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट इन अ ट्रायंगल ABP इज कॉल्ड एज AB डिवाइड बाय BP। तो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ट्रायंगल AB और P का, और दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है A डैश B डैश एंड P का। तो इसकी बात कर लें तो मैं इसके लिए डाल सकता हूँ ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और 10R की बात करूँ तो मेरे पास है ट्रायंगल A डैश B डैश एंड B डैश P। तो A डैश B डैश एंड B डैश P। चलिए AB का वैल्यू क्या है, बोलेंगे AB का वैल्यू है H है, B एंड P का वैल्यू क्या है, U है, A डैश B डैश का हाइट क्या है, H डैश है, एंड B डैश P का वैल्यू क्या है, V है। अभी हम लोग साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं। अभी साइन कन्वेंशन आपको बोलना है, मैं फिगर आपके सामने रखता हूँ भाई। हाइट का वैल्यू क्या रखो, पॉजिटिव नेगेटिव, बोलिए। एच पॉजिटिव H पॉजिटिव, और H डैश, एच पॉजिटिव H पॉजिटिव, एच डैश नेगेटिव होगा शायद से। H डैश नेगेटिव वो होगा। शायद से नेगेटिव होगा। U और V का बोल दीजिए। देखिए U कहाँ पर डाला हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, तो नेगेटिव। V को भी कहाँ डाला हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, तो उसको भी लगा देंगे नेगेटिव। तो खाली नेगेटिव एक्सेप्ट H ऑल दोस क्वांटिटीज आर नेगेटिव। तो चलिए लगा देते हैं हर एक के आगे नेगेटिव, एक्सेप्ट H के मेरे पास तीनों का क्वांटिटी हो गया नेगेटिव। तो अभी मेरा जो इक्वेशन है वो मुझे ऐसे दिखेगा, तो मैं डाल देता हूँ H डैश डिवाइड बाई H इज इक्वल्स टू माइनस V बाई U। अगर इट इज 4, अगर इट इज 4 दी कन्वेक्स टाइप ऑफ मिरर, तो प्लस V बाई U आता। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ द साइन कन्वेंशन वी आर गेटिंग दैट माइनस V बाई U। तो ये याद रखना है। तो अभी ये जो रेशियो मिला मुझे सर। क्या H डैश बाई सर H। अभी क्या क्या वापस हाँ बोल बोल बोल। सर अभी क्या क्या अभी वापस से क्या कैसे वापस रिपीट करें ना, ये आपने जो भी साइन हाँ कन्वेंशन का कहा ना, इसके बाद हाँ, वापस के ना ये। साइन कन्वेंशन तो मैंने डाल दिया, और मुझे मिला रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड दूसरा मुझे मिला डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो नेगेटिव साइन मिला, उसका मीनिंग ये हुआ कि साइन कन्वेंशन नेगेटिव है ओनली बिकॉज दैट इट इज फॉर द कनकेव टाइप ऑफ मिरर। कनकेव था इसीलिए मुझे माइनस V बाई यू मिला। अगर वो कन्वेक्स होता तो मुझे प्लस V बाई यू मिलता, क्योंकि चारों का साइन विल बी नेगेटिव and all will be getting that positive value. So H dash by H equals to plus V by U for the convex mirror. So this is how your convex mirror and concave mirror sign convention will be applied. अभी ये करने के बाद what you will do is called as there are two definition we can derive from this equation H dash by H and minus V by U. What you can observe is your definition. So first of all, you can observe that there is called as a ratio of H dash and H, and there is another ratio of V and U. So first of all, I am putting these values. So M is equals to H dash by H, and I am giving that minus V by U because right now I have used concave type of mirror. So very first definition of magnification is called as a ratio of height of image to height of object is called as a magnification. So this is how your magnification first definition will be derived from equation. तो ये पहला definition हो गया. Second definition, it is called as a ratio of रेशियो डिस्टेंस distance of image डिस्टेंस to ऑब्जेक्ट distance of object
तो ये हो गई आपकी दो डेफिनेशंस। अभी यार डेफिनेशन तो पता चल गया, बट वी आर हैबिचुअल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ आवर 11th और साइंस जर्नी और फिजिक्स जर्नी। हमको कोई भी क्वांटिटी मिलता है, वी वांट टू डिराइव इट्स यूनिट एंड डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन। तो भाई मैग्निफिकेशन का यूनिट क्या होगा और उसका डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो इट इज होल्डिंग नो यूनिट, बिकॉज आप हाइट बोलेंगे तो सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट और इमेज का हाइट बोलोगे दैट इज ऑल्सो सेंटीमीटर। तो रेशियो ऑफ सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर, दैट इज वाई द मैग्निफिकेशन इज कॉल्ड एज डायमेंशनलेस। dimensionless and unitless quantity. So it is not holding any type of a dimension, neither it is containing that unit as well. तो dimension और unitless quantity है, तो उसका कुछ हो नहीं पा सकता। अभी I want to recall so many unitless quantities right from the beginning of your 12th science journey. तो पहला वाला था relative permittivity, सेकंड था susceptibility, चैप्टर नंबर सेकंड। थर्ड वन जो है हमारा बोल सकते हैं हम लोग यूनिटलेस क्वांटिटी को इसमें था नहीं। सुपर। फोर्थ चैप्टर में था हमारे पास रिलेटिव परमिएबिलिटी, चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर। देन वी हैव क्वालिटी फैक्टर, चैप्टर नंबर 7। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 जहां पर मैग्निफिकेशन इज यूनिटलेस क्वांटिटी, और यही चैप्टर में वी विल हैव वन मोर क्वांटिटी व्हिच इज आल्सो यूनिटलेस, इट इज कॉल्ड एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, जो आपने 10th में पढ़ा होगा शायद। So this is how you can derive your all those unitless quantities. Almost every year you can find it out in your paper that they will ask you any option or any unitless quantity, and you have to either give it's a unit or either it's a dimensional configuration. तो मैग्निफिकेशन का ना तो यूनिट है ना तो डायमेंशन है, इट इज ए यूनिटलेस एंड डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। दूसरा, टाइप ऑफ द इमेज कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, magnification is equals to 1, and magnification is less than 1। तो क्या बोल सकते हो आप, इससे क्या डिराइव कर सकते हो? समटाइम्स इन एग्जांपल्स मैग्निफिकेशन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, समटाइम्स इक्वल्स टू 1 होगा, समटाइम्स लेस देन 1 होगा। तो हाइट ऑफ इमेज सर, हाइट ऑफ इमेज जो होगी ना, हाइट ऑफ इमेज जो जहाँ पे रखी होगी वो हाँ, वहां से बड़ी होगी। बड़ी होगी तो उसको हम लोग बोल सकते हैं एनलार्ज इमेज। और इक्वल टू 1 होगी तो इक्वल होगी दोनों की इक्वल दोनों। टू 1 होगा तो उसको बोल सकते हैं आप लोग हाइट या तो ऑब्जेक्ट का जो होगा दोनों इक्वल होगा। तो आई कैन जस्ट से दैट हाइट ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर इक्वल। तो कोई मैग्निफिकेशन नहीं हुआ है, इसको आइडियल इमेज बोल सकते हैं। और आइडियल इमेज का किस में देखने हम लोग देख सकते हैं? तो घर का हमारा जो डोमेस्टिक मिरर है उसको बोलते हैं, वी कैन से दैट प्लेन मिरर। इन दिस प्लेन मिरर यू कैन फाइंड इट आउट हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोथ आर इक्वल, और किसी में नहीं होता ऐसा। m इज ग्रेटर देन 1 और m इज इक्वल्स टू 1 होने के बाद m इज लेस देन 1 है हमारे पास, उसको हम लोग तो बोलते हैं एच। यूनिस्ट और श्रिंक्ड इमेज। मीन्स हमारा इमेज जो है वो छोटा हो चुका है कंपेयर टू दी हमारा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो विद द हेल्प ऑफ दिस मैग्निफिकेशन इक्वेशन, ग्रेटर देन 1, इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन 1, तो ये हो गया आपका इक्वेशन। अभी यहाँ पर आपको कोई डाउट हो तो बोलिए मुझे।